is a nothing but estimate means approximation. So this is nothing but a staircase approximation of the continuous time signal xt. Now what you can observe that the signal can be broken uh, into these strips, rectangular strips, and these rectangular strips can be approximated as impulse function that we have seen while defining an impulse function. Okay. Again, mathematically, uh, we are in uncomfortable position, but yeah. So this is a good approximation which can be made. So we know that we can represent impulse function in terms of a rectangular function given some condition. So this approximation can be expressed as a linear combination of delayed pulses. So this approximation we can represent as a linear combination of delayed pulses. No issues. Now how to define each pulse? So suppose this is the pulse or this is the rectangular pulse. So x0, it is representing the magnitude of this pulse. Magnitude of the signal xt at t equal to 0. So that is representing the magnitude. Then uh, uh, this delta function is defined earlier. We have also defined this. So this delta function is defined as 1 upon delta, which is nothing but slope 1 upon delta, and this is for the region or in the range t greater than equal to 0 and less than equal to delta, and it is 0 otherwise. And when you multiply this delta function with this delta, so you get a unit amplitude, and this has got a this becomes a unity. So this we have seen earlier while just taking a theoretical definition of impulse function. So this impulse function can be represented like this. Now a generalized function, generalized this pulse appearing at uh, delta k can be written as a k del k x k delta, which is representing the magnitude of this pulse. Then this impulse function appearing at k delta and multiplied by this delta. So once you are able to define the rectangular pulses in this form, we can move ahead. So we know that this multiplication has a unit amplitude. The approximation signal, the estimate of xt can be written as, so now this approximated signal can be written as summation of all the strips. So this is representing the magnitude, this is representing the pulse appearing at some delta step or appearing at k delta, and this delta is multiplied, so that's this overall multiplication is going to give you unity, and you just integrate it, just do the summation from k equal to minus infinity to infinity. So you are able to compute the estimate of the signal xt. Now, as this delta, it tends to 0, the approximation, this estimate of xt becomes equal to xt. Again, we have seen this kind of operation in mathematics. So when we take the limit and take this delta approaching to 0,
So what will happen? So this summation operation can be replaced or can be represented with some integration operation, where this x k delta is represented by x tau, and this delta is impulse function, and this delta is some arbitrary variable. And so from this summation expression, we can just uh, write uh, another expression considering this limit, and we can just write the expression in the form of integration. So xt is now represented as a integration of this x tau multiplied by this delta t minus tau and d tau, and integration is going from minus infinity to infinity. So this is a shifting time integral. So this is how uh, what we can find that in case of discrete time, any signal, any sequence can be represented in the form of a scaled version of the impulse, summation of the impulse. Here we find that uh, any signal can be represented as a scaled version of the impulses, and this we achieve by taking integration. So this is a very similar expression that we observe in case of discrete time. Only thing is that the summation part has been replaced by integration. Okay, so having done that, now we have to find the response of the system. So suppose if hk delta t is the response to some impulse del t minus k delta, then the overall response of the linear system can be given by now suppose for any function, impulse function, you have a impulse. This is the impulse function appearing at t equal to k delta, and you have a response for this is hk delta. Fine. So this is a generalized term. So what you can do now, you want to find out the overall response. So overall response will be the summation of all responses. So what we have seen that the all responses will be multiplied by the scaling factor. So this is the magnitude, this is the scaling factor, and you can get the overall response yt, and again you can put the limit that delta t this delta tends to 0. So when you just put this limit, so you can just change this summation operation into an integration operation, and you get yt equal to x tau h tau d tau. So this is a h tau is representing the response of the impulse which is appearing at t equal to tau. And this is the magnitude of the signal at that instant. So if the system is time invariant, now so this concept we have taken from the linearity. Now if the system is time invariant, means what happens, that impulse response will also not change. Impulse response will be the a scaled version of the same impulse response that you obtain at any point of time, because system is time invariant. So अगर time invariant system है, so this hk delta t
is nothing but the response that I get at t equal to 0, and the same response is shifted to t equal to k delta. So only the delayed version of the response that I receive at t equal to 0. So I'm getting the same response, only the delayed version I am getting. And H0 means the response that you get at t equal to 0 is generally represented by HT. So HT means you are getting the response, you are getting some response at t equal to 0. And the same response you will be getting at any t, any time instant. Only you will be getting a shifted version. Okay? But response, the attribute of the response will be the same. So the response at t equal to tau is given by h tau, which is nothing but the shifted version of the response that you get at t equal to 0. So this is h0 t minus tau. No need to rewrite here 0. So this is understood. So the response at tau you get as a tau is nothing. Tau is a k delta. I have taken k delta. So that is a shifted version of the response that you get at t equal to 0. So having understood that, uh, because of the property of time invariance, means the response is not changing. Only the scale of the response will be changing depending upon the scale of the input pulse. So the output of the system, LTI system, can be written as ये देखिए. So this h tau we can replace with ht minus tau, and the output of the system, LTI system, or the response of the LTI system can be given by this expression. This is a x tau ht minus tau d tau, and you have to do integration from minus infinity to infinity. Okay, so this is how. So what you are requiring two functions. One, you are requiring this x tau, and other function that you are requiring is ht minus tau. You are going to multiply these functions and you are going to integrate it from minus infinity to infinity. So similar kind of operation that we perform in case of a discrete time. Okay, so look from the another perspective. So what we are doing, so take continuous time function, decompose as a rectangular pulses represented by, and rectangular pulses, you know that rectangular pulses you can represent mathematically, you can represent them as a impulse function. So that is what we have done. Then each rectangular pulse generates individual response. Okay. So what you have to do, you have to just add up all the responses. So this is how we have to compute the convolution. So you have to perform the convolution operation in continuous time, and the outcome that you'll be giving, will be getting, is a response of a LTI system. Okay. So now take one example. So for some LTI system, suppose xt, I have taken as a unit step function, ut, and this is the response. The response is e raised to the power minus at ut, where a is greater than 0. Now we want to find the response. यहाँ पे क्या करना है? So you have to find yt. So basically you have to find the convolution of the two. So yt is a xt convolved with ht. Okay. So it can be represented as a x tau ht minus tau d tau. Now to compute this, what you require two functions. You required x tau
you required this function and you required ht minus tau. और आपके पास क्या है, xt है और ht है, ये दोनों आपके पास इक्वेशन है, ठीक है, ये दोनों आपको दिए हुए हैं. So what you have to do, you have to just change the plane, or you have to change the independent variable. So you have a very similar function. Only thing that you have to do is you have to replace t by tau, and you can just have a function x tau and h tau. So this is your first objective, to get x tau and h tau. So you can easily get, only thing that you have to do, you have to change the independent variable t to tau. That's all. Okay. अब इसमें क्या करना है, आगे आप देखोगे कि you can take the inverse, or you can take the time reversal of either of the two signals. कोई सा भी सिग्नल का आप टाइम रिवर्सल ले सकते हो. अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम वी आर फोकसिंग ऑन दिस सिग्नल ओनली, सो हम इसी का टाइम रिवर्सल लेते हैं. अदरवाइज यू कैन टेक टाइम रिवर्सल ऑफ एनी ऑफ द टू सिग्नल्स दैट यू आर ऑपरेटिंग विथ. सो हमने क्या किया, एच टॉ का टाइम रिवर्सल ले लिया, सो दैट विल बी द मिरर इमेज ओवर दिस y एक्सिस. So this is nothing but this is a function ht minus tau, where t equal to 0. So when you put t equal to 0, so for t equal to 0, this is h minus tau. So this expression you get. Now अब क्या है, अब आपको कोई सा भी एक्सप्रेशन निकालना है, कोई सा भी. So for t less than 0, so if t is negative, ठीक है, हमने आपको पहले भी एक एग्जांपल करके दिखाया था, और यहाँ पे भी आप ये देख सकते हो कि जब हमने आपको कहा था कि अगर आपको ट्रांसफॉर्म सिग्नल अगर प्लॉट करना है, यानी कि सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ अल्फा टी प्लस बीटा, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले शिफ्टिंग ऑपरेशन करते हैं, ठीक है. देन यू डू द शिफ्टिंग ऑपरेशन एंड देन यू डू द दिस थिंग रिवर्सल ऑपरेशन, ठीक है. एंड नहीं शिफ्टिंग किया, रिवर्सल, देन जो है उसकी स्केलिंग अगर कुछ है तो स्केलिंग. ऐसा ही था क्या, क्या था स्टेप, भूल गया मैं तो. सपोज x -2 प्लस -2t प्लस 1 है, और सिग्नल दिया हुआ है x t. सबसे पहले क्या करेंगे, x t प्लस 1, ठीक है. उसके बाद क्या करना है, सर फिर मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 2 मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे टी में. अच्छा 2 से किसको मल्टीप्लाई कर देंगे, अच्छा अच्छा, इसको पूरे को हम 2 से वो करेंगे, ठीक है. उसके बाद उसको हम क्या करेंगे, नेगेटिव रिवर्स कर देंगे. रिवर्स करेंगे. भूल गया मैं, इसीलिए मैं भी डिटेल में लिखा दिया था सब, ठीक है. चलिए ठीक है, ओके. अब यहाँ पे क्या है कि अब अगर आप देखो ऐसे ही कर रहे हो, जैसे आपने क्या किया, माइनस पहले आपने रिवर्स कर दिया. उसके बाद अगर यहाँ पे आप देखोगे, अगर ऑपरेशन देखोगे कि जैसे मान लीजिए कि h 2 माइनस टॉ, ठीक है ना, 2 माइनस टॉ, ठीक है ना. इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये हो गया, मतलब आप
या तो आप वैसे कर लो जैसे मैंने पहले बताया था स्टेप, या आप यहाँ पे आप देखोगे व्हाट यू कैन ऑब्जर्व हियर कि जैसे H2 माइनस टॉ है, इसका मतलब क्या है, जो माइनस टॉ वाला है उसको +2 पे लेके चले जाओ, यानी कि ये जो है ये कुछ इस तरह का आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये कुछ, ये जो सिग्नल है ये कुछ ऐसे आ जाएगा, समझे। H, ये माइनस टॉ आपको पता है, अब इसको, ये प्लस है तो प्लस यहाँ पे उल्टा हो रहा है, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जनरली क्या करते हैं कि t-1 तो हम क्या करते हैं, इधर ले जाते हैं, किधर, राइट हैंड पे ले जाते हैं, और +1 तो लेफ्ट एडवांस मतलब इसके पहले ले जाते हैं। तो ये चीज बड़ा कंफ्यूजिंग है थोड़ा, लेकिन यहाँ पे सही है, अगर रिवर्स कर दिया है ये, उसके बाद क्या है, माइनस, ये जो है 2 माइनस टॉ है, तो ये इसको आगे ले आओ, प्लस आगे बढ़ जाओ, ठीक है। अगर ये क्या हो, H -1 माइनस टॉ, ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गया, ये कुछ यहीं पे आ गया, ये मान लीजिए -1 है, ये ठीक है यहाँ पे। तो इस तरह से अगर प्लस है, ठीक है, माइनस टॉ ये तो है ही, एक मिनट, तो ये जैसे है, अब जैसे नीचे आइए, तो अगर इसमें ये आप क्या ऑब्जर्व करते हो कि अगर t जो है लेस देन 0 है, ठीक है, जो कि इस केस में है, जैसे मान लीजिए मैंने वो ले लिया फंक्शन h -1 माइनस टॉ, ठीक है, क्योंकि हम जो फंक्शन लिख रहे हैं, आई एम वर्किंग विद द फंक्शन h t माइनस टॉ, ठीक है, so if t is less than 1, so I will be getting this kind of, so this is representing t -1, और अगर क्या है, t greater than 0 है, so you can just come towards this side, ठीक है। ये जरा सा उल्टा मामला है जो हम लोग, क्योंकि हम उल्टा चल रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी वी हैव टेकन द रिवर्स, तो यहाँ पे हम जो एडवांस का मतलब एडवांस और डिलेड का जो काम करते थे नॉर्मली, उसका अपोजिट करेंगे, ठीक है, और ये बड़ा कन्वीनियंट है। अगर प्लस है तो आगे बढ़ जाओ, माइनस है तो पीछे चले जाओ, ठीक है, ये कन्वीनियंट है। वो जो नॉर्मल है वो गड़बड़ है, वो मतलब सोचने में उल्टा लगता है। सो दिस इज हाउ यू कैन डू, लेकिन ओके, उसके बाद क्या है, तो अल्टीमेटली अगर आप ये देखोगे कि ये कट गया क्या हमारा भाई, सो दिस इज अ आई थिंक दिस इज x टॉ, ये हमारा h t माइनस टॉ है, ठीक है, और अब जैसे अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या देखते हैं कि वी सी दैट फॉर t लेस देन 0 h टॉ x टॉ एंड h t माइनस टॉ डू नॉट ओवरलैप। अब एक बात जान लीजिए, ये दोनों जो सिग्नल हैं, ये आपको कुछ आउटपुट इंटीग्रेशन जो करने वाले हो, आउटपुट वहीं पे देंगे जहां पे ये कुछ क्या कर रहे हो, जहां ओवरलैप हो रहे हैं, क्योंकि दोनों सिग्नल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो निगेटिव अगर है t इक्वल टू t लेस देन 0 के लिए क्या है, you don't have, they are not overlapping, so you will be getting no response, you will be getting 0, ठीक है। So what happens that while t is greater than 0, they overlap from tau equal to 0 to tau equal to t, ठीक है। इस केस में ये कहाँ होगा, इस रेंज में वो ओवरलैप करेंगे दोनों सिग्नल, इस रेंज में, ठीक है। सो एक तो क्या हो गया कि फॉर t लेस देन 0 क्या हो गया, yt हमारा क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। और फॉर t ग्रेटर देन 0
yt क्या होगा? नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट फ्रॉम 0 to t ओनली, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से नहीं आना है. वी हैव टू come from, not, you don't have to cover the whole range from minus infinity to plus infinity. आपको 0 से t तक ही जाना है क्योंकि t तक ही ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है. So then you write the two equations in this range, in this defined range. ये दोनों इक्वेशंस हैं, इसको लिखिए, मल्टीप्लाई करिए. कट गया, अरे ध्यान दिया नहीं. Okay, so so when you just try to solve it, so this will be having unity value, this is having unity value, and just go on solving it, and you get 1 upon yt, you get as a yt, you get as a 1 upon a and 1 minus e to the power at, and this has to be multiplied by ut, because you know that this function, this you are not going to get any response for negative value of t, ठीक है. So it is going to give you response only at t greater than equal to 0. That's why you can multiply this signal with the ut. So this is how you can get the convolution done, and subsequently you can get the yt, which is a response of the given system. Okay, now you can find an example in the book where what they have taken, they have not, आपको सर ने बताया होगा कि आपको एक सिग्नल को फिक्स रखना है और दूसरे को इन्वर्स करके उसको स्लाइड करना है, ठीक है, और वो कोई सा भी सिग्नल हो सकता है. यहाँ पे हमने इम्पल्स फंक्शन को लिया. You can just keep this impulse function fixed. You can take this आप इसको आप इनवर्स, इसको आप रिवर्स ले लो इसका, and then you can try to slide over this signal, and you just do the integration. So the same example you can find in the book where they have done it differently. They have used another signal. They have used the input signal for shifting purpose, ठीक है. So okay, now there are some properties of convolution which will help you in solving the problems. अब एक है cumulative property. ये सब property आप पहले से बहुत सारे देखे हो, लेकिन यहाँ पे इसका कुछ इस्तेमाल है. जनरली हम बहुत सारा कभी इस्तेमाल करते हैं, कभी नहीं करते हैं. So this is your signal, this is your response, and the convolution of two. Now this is equal to the response. This is impulse response convolved with the input signal. So if you just interchange it, it doesn't affect. Same thing happens in case of a continuous time. अब जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है 3.1 में. So this is a some input sequence and this is a response, ठीक है. एंड आप क्या करो, अब आप क्या करो, इसका सीक्वेंस चेंज कर दो. सो दिस कन्वॉल्व विद दिस इज इक्वल टू दिस कन्वॉल्व विद दिस, ठीक है. और इसी तरह से जब अभी हमने एग्जांपल लिया था कि दिस इनपुट सिग्नल कन्वॉल्व विद दिस एच टी, और दिस रिस्पॉन्स, और दिस में भी द इनपुट सिग्नल कन्वॉल्व विद द रिस्पॉन्स सिग्नल. सो यू आर गोइंग टू गेट द सेम आउटपुट. अब इसका क्या है, देखने में तो ऐसे ही लगता है जैसे हम बहुत सारी चीजें देखते आए हैं कम्युलेटिव प्रॉपर्टी का, बट it may help you in just making some decision or it making some observations. So we will see that. Now associative property भी आपने ऐसे देखा होगा. Nothing to say. X convolve with output of H1 convolve with H2. So this is equal to convolution of X with the H1 and the convolution of the whole with the H2. इसका भी कुछ मतलब होगा, we'll देखेंगे, we'll just try to see. Then distributive property. So this is X convolve with the summation of
H1 and H2, so it can be written like this. Fine. Now, what are the implications of these properties to LTI system? So that is important. अब इसमें क्या है देखिए, कम्युलेटिव प्रॉपर्टी. अब क्या है, x इनपुट है, then the response of the system is h and output is x convolved with h. अब क्या है कि मान लीजिए इनपुट सिग्नल जो है वो h हो, ठीक है, and the response of the system is x, then the output we are going to get is a h convolved with x, ठीक है. तो अब इसमें पता नहीं चलता है कि अगर, क्योंकि क्या है कि इनपुट भी क्या है, एक इक्वेशन है, रिस्पॉन्स भी एक इक्वेशन है, ठीक है ना. अब कौन सा इनपुट है, कौन सा रिस्पॉन्स है, ठीक है, उससे सिस्टम के आउटपुट को कोई फर्क नहीं पड़ता है. सो दिस इज द ऑब्जर्वेशन दैट वी कैन गेट. तो आपको अगर एक आउटपुट ये मिल रहा है तो आपको ये पता, ये दोनों में से कोई सा भी इनपुट हो सकता है और दूसरा जो है रिस्पॉन्स हो सकता है, इंपल्स रिस्पॉन्स हो सकता है सिस्टम का, ठीक है. सो व्हाट वी ऑब्जर्व हियर इज फॉर एलटीआई सिस्टम, ठीक है, सिस्टम आउटपुट इज इंडिपेंडेंट ऑफ which function we call input or which function we call as a impulse response. System doesn't care. ये भी देखो हमारा वर्ड नहीं है, ये भी जो है ये ओपेनहेम उन्हीं का वर्ड है, ठीक है ना. सो सिस्टम डजंट केयर कौन सा इनपुट है और कौन सा रिस्पॉन्स है, क्योंकि कौन सा इनपुट है और कौन सा इंपल्स रिस्पॉन्स है, क्योंकि आउटपुट जो है, रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम इज गोइंग टू बी द सेम, ठीक है. ओके. ओके, कुछ पूछना है किसी को? No, sir. Okay. No, sir. Now, so if two LTI systems are cascaded, अब क्या है कि दो LTI सिस्टम अगर cascaded है, H1 cascaded with H2, so this is response, you can easily figure out, ठीक है, कोई बात नहीं है. अब क्या है, अब आपका जो है कुछ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है. अब मान लीजिए कि दो सिस्टम्स अलग अलग हैं. अब दोनों क्या हैं, आपका कोई सिस्टम है, there is a some system represented by convolution of the two different functions, ठीक है, and you give the input, you get the output, ठीक है. अब क्या है, so what happens that so अब क्या है, अब आपने क्या किया कि ये H1 convolve with H2, so it is equal to H2 convolve with H1, ठीक है. ये कहां से आया, ये कम्युलेटिव प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी हमने लगाया. और इस केस में क्या है कि xt अगर इनपुट है तो आउटपुट हमें ये मिल गया, ठीक है. और अब इसमें क्या है कि कुल मिला के इससे ये समझ में आता है, इस ऑपरेशन से, कि आप जो है अगर सिस्टम कास्केडेड है, ठीक है ना, अगर ये क्या है, इफ टू सिस्टम्स आर कास्केडेड, अगर दो सिस्टम कास्केडेड हैं, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से ये समझ में आता है कि आप जो है सिस्टम को इंटरचेंज कर सकते हैं. सिस्टम कैन बी इंटरचेंज, कोई सा भी सिस्टम इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं. ये जो है एलटीआई सिस्टम को आप इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है. क्योंकि मैंने आपको पहले भी एग्जांपल में बताया था, सिस्टम जो मैं पढ़ा रहा था, कि आप ऐसा नहीं है कि कोई सा भी सिस्टम को आप जो है अगर कास्केडेड सिस्टम है उसको अब इंटरचेंज कर देंगे तो आउटपुट सेम रहेगा, ऐसा नहीं है. अब दो रजिस्टर्स हैं, ठीक है, कास्केडेड यानी कि सीरीज में कनेक्टेड, आप इंटरचेंज कर दो, ठीक है, लेकिन it will not work for other systems, many systems, but for LTI system you are allowed to do that. So associative property से आपको ये पता चलता है कि ये आपको फायदा होगा कि आपको अगर जरूरत पड़ी, and if two systems are cascaded you can interchange the systems. उसके बाद क्या है, interconnection of the systems in parallel. अब ये दो सिस्टम अगर पैरेलल में हैं
तो इस दोनों पैरेलल सिस्टम को आप एज ए उसका आप यू कैन रिप्रेजेंट विथ अ सिस्टम हैविंग अ रिस्पॉन्स एज अ समेशन ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ द टू डिफरेंट सिस्टम्स। आप इस ये जो है ये इस तरह के पैरेलल सिस्टम को यू कैन जस्ट रिप्रेजेंट using this kind of system. So this is a system having response which is a sum of the response of the two systems S1 and S2। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे लिबर्टी है। उसके बाद हो गया अगर एलटीआई सिस्टम में क्या है कि मेमोरी है और विदाउट मेमोरी है, क्योंकि एलटीआई सिस्टम में भी क्या हो सकता है, विथ मेमोरी विदाउट मेमोरी हो सकता है। So let us see what will happen with LTI system. So implication of impulse response for LTI system when system has memory or system is memoryless। सिस्टम के पास मेमोरी है या फिर सिस्टम मेमोरीलेस है। ठीक है, तो एलटीआई सिस्टम के इम्पल्स रिस्पॉन्स पे क्या फर्क पड़ेगा। मान लीजिए कोई सा भी सिग्नल है एच टॉ है और इम्पल्स रिस्पॉन्स उसका जो है क्या है किसी भी सिस्टम का एच टी माइनस टॉ है। ठीक है, तो आप जो है रिस्पॉन्स इस तरह से कैलकुलेट करते हो। अब क्या है, टू गारंटी द आउटपुट डिपेंड्स ऑन इनपुट एट टी इक्वल टू टॉ। ठीक है, एच टी माइनस टॉ नॉन जीरो एट टी इक्वल टू टॉ इक्वल टू टी। ठीक है, और क्या है क्या है कि अगर सिस्टम क्या है कि मेमोरी लेस है, यू जस्ट विजुलाइज सिस्टम एक मेमोरी लेस है, इसका मतलब ये है कि अगर मैंने इम्पल्स दिया किसी टाइम इंस्टेंट पे मैंने इम्पल्स दिया, किस टाइम इंस्टेंट पे, टी माइनस टॉ मान लीजिए। हाँ, ये तो हमको आउटपुट जो है या जो ये इस इम्पल्स का जो रिस्पॉन्स है, ठीक है, इट शुड बी नॉन जीरो ओनली एट टी इक्वल टू टॉ। ठीक है, और बाकी जगह पे बाकी किसी टाइम पे ये जीरो होना चाहिए। इट शुड बी नॉन जीरो ओनली एट टी इक्वल टू टॉ इक्वल टू टी और टी इक्वल टू टॉ। ठीक है, बात समझ में आ रही है, क्योंकि अगर मैंने एक इम्पल्स दिया है, ठीक है, इम्पल्स किसी टाइम इंस्टेंट पे मैंने एक इम्पल्स दिया है इनपुट सिस्टम को, तो जो रिस्पॉन्स हमारा आएगा वो सिर्फ उसी टाइम इंस्टेंट पे डिपेंड करेगा। यानी कि ये जो रिस्पॉन्स है, ये जो रिस्पॉन्स हमको मिलना था एच टी माइनस टॉ, ये नॉन जीरो रहेगा ओनली एट टॉ इक्वल और टी इक्वल टू टॉ। एट ऑल अदर वैल्यूज ऑफ टी इट इज गोइंग टू बी जीरो। ठीक है, so if this is the condition then the system will be the memoryless। ठीक है, और अगर मैंने किसी भी इंस्टेंट पे एक इंपल्स दिया और मेरा इंपल्स रिस्पॉन्स जो है किसी और टाइम इंस्टेंट पे भी डिपेंड कर रहा है या उसकी वैल्यू किसी दूसरे टाइम इंस्टेंट पे भी है, तो क्या है देयर इज द सिस्टम इज विथ मेमोरी। ठीक है, सो एलटीआई सिस्टम इज फाइन विथ मेमोरी एंड मेमोरीलेस। ठीक है, लेकिन आपको क्या पता चल गया कि if the system is to be memoryless it must have impulse response। अच्छा, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि if the system is to be memoryless it must have impulse response to be scaled impulse। यानी कि अगर इनपुट जो है वो एक इम्पल्स है तो आउटपुट भी इम्पल्स आना चाहिए। उसका एम्पलीट्यूड कुछ भी हो सकता है, आप स्केल कर लो, क्योंकि दूसरे टाइम इंस्टेंट पे रिस्पांस उसका जीरो आना चाहिए। ठीक है, तो आप देखो कि ये निकल के आ गया हमारा
कि अगर मेमोरीलेस सिस्टम है, एलटीआई सिस्टम, ठीक है, तो इम्पल्स रिस्पॉन्स जो होगा वो क्या होगा, दैट विल बी द स्केल्ड वर्जन ऑफ द इनपुट इम्पल्स, ठीक है, बोथ फॉर डिस्क्रीट टाइम एंड कंटिन्यूअस टाइम, ठीक है। एनी अदर रिस्पॉन्स, अगर क्या है कि कोई और भी रिस्पॉन्स आ रहा है इसके अलावा, इसका मतलब सिस्टम इज विथ मेमोरी, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि एक अगर हमारा एलटीआई सिस्टम है मेमोरीलेस, तो उसका क्या होगा, आउटपुट विल बी प्रोपोर्शनल टू द इनपुट सिग्नल, both in case of continuous time or discrete time. So output is proportional to the input signal. इनपुट को आपने क्या क्या अलग इम्पल्सेज में बांट दिया, आउटपुट भी आपको अलग अलग इम्पल्सेज में मिलेंगे, स्केल्ड वर्जन, ठीक है। इनपुट पे अगर एक इम्पल्स है तो आउटपुट पे भी एक इम्पल्स ही मिलेगा, स्केल्ड वर्जन, ठीक है। सो क्या है, आप क्या कर सकते हो कि आप ये कह सकते हो कि for memoryless system, output response is proportional to the input signal, ठीक है। ये बात समझ में आई? हेलो, यस सर। हाँ Yes. ठीक है। यस सर। अब देखो एक दूसरा प्रॉपर्टी आ गया इन्वर्टेबिलिटी की, तो इन्वर्टेबिलिटी जल्दी से बता देते हैं। क्या है कि मान लीजिए हमारे पास एक सिग्नल है और उस एक सिस्टम है, उसका रिस्पॉन्स ht है, और उसके आगे हम एक कास्केड लगा दे दूसरा सिस्टम जिसका क्या है कि h इनवर्स, ठीक है, इनवर्स इनवर्स दिस इज इनवर्स ऑफ दिस ht, ठीक है। और अगर ऐसा लगा दें तो हमको आउटपुट, अगर मतलब ये फंक्शन है, ये रिस्पॉन्स है, उसके आगे एक और अब उसका इनवर्स लगा दें तो आउटपुट जो हमें wt मिल रहा है वो xt मिलना चाहिए। और इसका मतलब y जो है वो क्या है, x एंड कन्वोल्यूशन ऑफ h एंड h कन्वॉल्व विथ hi, दैट इज द इनवर्स फंक्शन, और इनवर्स ऑफ द इम्पल्स रिस्पॉन्स h, ठीक है। और ये अगर हमको x मिल रहा है, आउटपुट पे हमें x मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये जो है ये h convolve with h inverse, it must be a delta function। ये जो है आप थोड़ा सा अगर सोचोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि ht convolve with h inverse, आपको h इनवर्स निकालना पड़ेगा, किसी भी कोई सा भी रिस्पॉन्स दिया उसका एक इनवर्स रिस्पॉन्स निकालना पड़ेगा। सो इफ यू फाइंड इट that if you just convolve h with h inverse, then you must be getting a delta function, fine। ये जो है कन्वोल्यूशन की एक प्रॉपर्टी है, वो हम आगे भी देखेंगे। और थोड़ा सा अगर आप सोचोगे, क्योंकि वी हैव गिवन यू अ रीजनेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ दिस कन्वोल्यूशन टेक्स प्लेस, ठीक है। तो h इनवर्स और h ये दोनों अगर डेल्टा फंक्शन होंगे तो क्या है कि आप देखोगे x को, अगर क्योंकि आप क्या देखते हो कि x को अगर आप कन्वॉल्व करते हो एक डेल्टा फंक्शन के साथ, देन ओनली यू गेट अ xt। और xt, सपोज xt आई कन्वॉल्व विथ अ डेल्टा फंक्शन, आई विल गेट xt, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि ht और h इनवर्स t, इसका कन्वोल्यूशन जो है हमको एक डेल्टा फंक्शन मिलना चाहिए। क्लियर? यस सर। Yes, sir. ओके, तो आज के लिए जो है ठीक है, कहाँ तक पहुंचे, यहाँ तक पहुंचे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब इसमें दो कॉन्सेप्ट हैं, एक तो क्या है कि भाई व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ एलटीआई सिस्टम ऑन द कॉजेलिटी, ठीक है, और दूसरा स्टेबिलिटी। ये दो चीज देखेंगे, फिर कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह देखेंगे, देन वी विल जस्ट कंक्लूड दिस चैप्टर। क्लियर?
So that's all for today. Let me take the attendance. Okay, so I have taken the attendance. और चलो ठीक है. So अगर चलो बाद में बात करेंगे, आज कम ही बात करेंगे बस. सो टुमारो इज 26th January. So happy Republic Day in advance. Happy Republic Day. Same to you, sir. Happy birthday. Thank you, sir. Okay, thank you.